shadows. अब हम पढ़ेंगे about the shadows and how they are formed. To discuss this topic, we have various activities with us. So let's talk about activity number 2 from your book, that hold each of the opaque objects in the sunlight slightly above the ground. For example, this is the opaque object that I'm holding, and if I am standing outside under the sun, I am going to hold my object like this. So this is the first step that we have to do. Next is, dark patch formed on the ground is due to its shadow. Now, secondly, this was the object that I was holding earlier. But if you look down on the ground, you'll see that the shape of this object is being formed in the black color patch on the ground. आपको इसी का black color का patch similar size का आपको ground पे नजर आएगा. So what are those? So those are the shadows. Even if we go outside for the walk in the sunny day or to go play or for any other work, we'll find that our shadows are also formed on the ground. So such dark patches which are formed against the sunlight. Object के against sunlight होती है and उसकी वजह से जो shadow form होती है उसको हम क्या बोलते हैं? Shadow. And form कैसे होती है वो? How it is formed? Because let's consider our body. So our body is the opaque object. Opaque object होने का मतलब क्या है कि यहाँ से हमारी बॉडी से लाइट पास नहीं हो सकती. So वो क्या करेगी? हमारे बॉडी के शेप के थ्रू पास करेगी. It will pass from the sideways of our body. So that way the shape of or structure of our body is formed on the ground as black patch. क्योंकि बॉडी के अंदर से सनलाइट नहीं पास कर सकती. So it is passing from the sideways. That is why आपको side structure as a shadow नजर आता है on the ground. So now try drawing the shadow on the sheet of a paper while your friend holds the object above the ground. So this is the picture. Here one student is holding or standing with his or her hands up in the air, and you'll see the shadow is being formed on the ground. So you can also draw the shadow of your friend or anything your friend is holding in his hand to see that if this is the structure that person is holding or not. कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये उसी इंसान की shadow है? So try drawing it and then you'll know that okay, the person who is standing here, ये उसी की shadow है which is being formed. Now we have another activity. This activity is to be done in the dark. अब ये activity हमें कब करनी है? शाम के टाइम करनी है. So go out in an open ground with a few friends in the evening. कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ जाइए इवनिंग में, पार्क में जाइए खेलने के लिए, है ना? बट साथ में what we have to take torch and large sheet of cardboard. एक टॉर्च लेना है और एक लार्ज शीट लेनी है कार्डबोर्ड की. Now light the torch on your friend's face with cardboard behind him. Shadow can be seen on the cardboard. So here is the picture. आपका फ्रेंड जो है वो कार्डबोर्ड के सामने ऐसे खड़ा है. Now you light a torch on your friend's face with cardboard at the back. So if I am that friend and I am standing just in front of the cardboard and somebody is pointing torch on my face, so what will happen? A shadow will be formed at the back of the cardboard. Yes? So इस activity का करने का मतलब क्या है? That we saw that shadow is being formed during the sunlight. जब sun होता है तो shadow form करती है. But what about the night? So here also, अगर कहीं भी आपको light नजर आएगी, जैसे for example in this case, अगर टॉर्च से लाइट नजर आ रही है, then also अगर पीछे कोई क्लियर बैकग्राउंड है तो there also the shadow will be formed. Yes? Also there is one fun fact that few shadows can be created with our hands and make believe that they are shadows of different animals. So it's a very fun activity to do. You can do at your home also and at your school also where you will find a sunlight or the place to show your talent. So this is how it will look. You can form shadow of dog, rabbit, bird using your hands. So it's a very interesting activity and it's a very fun thing to play, also to learn side by side. So next activity is activity number 4. Now in this activity, place a chair in the school ground on a sunny day. Sunny day के टाइम एक अच्छी खासी चेयर जो आपको visible हो properly shadow में, सुंदर सी दिखे, वो आपको रखनी है. Now, does the shadow give an accurate picture of shape of chair? तो आपने जिस प्लेसमेंट पे वो चेयर रखी है, क्या आपको वो एक्यूरेट रिजल्ट दे रही है? क्या शैडो एज इट इज चेयर की तरह फॉर्म हो रही है ग्राउंड पे? दैट यू हैव टू ऑब्जर्व. ऑल्सो इफ इट इज टर्न्ड अराउंड अ लिटिल, हाउ डज इट्स शेप चेंज?
और अगर आपने उस चेयर को हल्का सा टिल्ट कर दिया या साइडवेज घुमा दिया तो क्या उसकी शेप चेंज होगी या नहीं होगी? हियर आई टेल यू वन थिंग कि अगर तो आपने एक पोजीशन पे चेयर रखी है, अगर आपको उस पोजीशन से, अभी मैं आपको बहुत ही जनरल डिस्कशन में बता रही हूं दैट अगर आपने किसी भी पोजीशन पे अपनी चेयर रखी है और उस पोजीशन से आपको एज इट इज शेप दिख रहा है, चेयर का शैडो दिख रही है चेयर की, एंड इफ यू आर टिल्टिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो यू माइट फाइंड दैट कि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आइदर द शैडो ऑफ चेयर विल बी लॉन्गर, आइदर इट विल बी शॉर्टर. So it depends that on which direction you are moving your chair. So yes, here if we move the chair in different direction, the shape of shadow or the size of shadow will be changed. Yes, तो अगर हम उसको थोड़ा साइडवेज घुमाते हैं तो या तो either the shadow of the chair will be bigger, longer, or it will be shorter. Shape of the shadow, yeah. So next is take a thin notebook and look at its shadow. अब क्या करना है? Thin notebook ली हमने, उसका shadow देखना है. Do this with rectangular box too. You can take the example of rectangular box also, or you can take flowers of different objects with different color. या आप कोई different object ले लो जिसका color different है. You take different colors of flowers. Yes, for example, red rose, yellow rose, any rose you can take, or you can take any colorful toy also. So now the question arises, do shadows look different in color? तो अब ये आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जो शैडो फॉर्म होती है यूजिंग दीज ऑब्जेक्ट्स और चेयर, तो क्या उन शैडोज में भी कलर आता है, और डू दे ऑल लुक ब्लैक? सो हियर द आंसर विल बी, आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर देखते हैं सनलाइट के अंडर, तो उस ऑब्जेक्ट की अगर शैडो फॉर्म होगी तो इट विल ऑलवेज बी ब्लैक. क्यों? क्योंकि सनलाइट उस ऑब्जेक्ट के थ्रू पास ही नहीं कर रही है. ऑल्सो अगर ब्लॉकेज होगी तो ब्लॉकेज के पीछे का जो एरिया होगा इट विल ऑलवेज बी ब्लैक. सो हियर द शैडोज ऑफ all the objects are black. सारे objects का जो shadow आएगी it will be black in color, जो आपको नजर आएगी on the ground. Now take a long box and look at its shadow on the ground. एक long box आपने लेना है और उसका आप shadow हमने observe करना है, but with a twist. Moving the box around will change the size of its shadow, as we know. But how come? So here's the question for you. When the shadow of the box the shortest? When the long side of the box is pointed towards the sun, or when the short side is pointing towards the sun? So अब आपको बताना है कि उस बॉक्स का आपको सबसे शॉर्टेस्ट शैडो कब दिखेगी. उस टाइम पे कि उसका जो लॉन्गेस्ट जो साइड है वो सन के टुवर्ड्स हो, या शॉर्टेस्ट साइड वो सन के टुवर्ड्स हो. सो हियर द आंसर विल बी कि जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट करते हो टुवर्ड्स द सन, अगर आप उसको लॉन्गर साइड की तरफ से पॉइंट करते हो टुवर्ड्स द सन, सो द शैडो फॉर्म्ड विल बी शॉर्टर. एंड अगर आप उसको शॉर्ट साइड से अगर आप सन की तरफ रखते हो उसका शॉर्ट साइड, तो द शैडो फॉर्म्ड विल बी लॉन्गर. Yes, so here the answer is very much clear now that the long side of the box pointing towards the sun will form the shortest shadow.
Yes? So, this is your answer.